So, hello everyone. Namaskar, Namaste. My name is Prasad Shinde. I have scored All India rank 287 in UPSC Civil Services exam 2019, and also I have scored All India rank 10 in UPSC Indian Forest Service exam of 2019. I was also Maharashtra topper in Indian Forest Service exam. So, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि हिमालयन ट्रैक एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें मतलब कौन से जगह हम जाते हैं, कौन कौन होते हैं उसमें क्या क्या इश्यूज़ फेस करते हैं, एग्जैक्टली उसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है. तो पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा. यूजुअली जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो रफली 96 डेज़ का होता है, लेकिन इस बार कोविड के वजह से वी हैड ओनली फाउंडेशन कोर्स फॉर 2 मंथ्स. इस बार सिर्फ 66 डेज़ के लिए फाउंडेशन कोर्स था. एंड इस बार फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ अराउंड 12 अक्टूबर एंड वो था दिसंबर 18 तक. यूजुअली जो फाउंडेशन कोर्स है वो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ एंड 2 मंथ्स में उसे रैप अप किया गया. अभी जो हिमालयन ट्रैक है ना, वो हिमालयन ट्रैक ये यूजुअली सितंबर मंथ में होता है, यूजुअली जो नॉर्मल ईयर है. इस बार हमारा हिमालयन ट्रैक हुआ नवंबर में. एंड जो नॉर्मल हिमालयन ट्रैक होता है वो होता है 14 to 15 डेज़ का. इस बार हमारा हिमालयन ट्रैक था 7 डेज़ के लिए. For all the UPSC CSE aspirants, I have got a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE GS batches. The batches will be starting from 18th of January and the batches are in 6 months, 1 year and 2 years. The batches will complete your UPSC preparation. What is a new feature about these batches? They will complete your entire GS syllabus with 500 hours of live classes, free PDF study material will be provided, a structured schedule and doubt clearing sessions will be there from top Unacademy educators. The batches will be conducted in bilingual Hindi and English. What are you waiting for? Enroll now in the 18 January batches. All you have to do is to enroll, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app. As per your preparation, select your batch, get an instant discount of 10% using the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. सो ये हिमालयन ट्रैक होता क्यों है? सो यूजुअली इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिसर ट्रेनीज़ हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. सो अराउंड 20 to 22 पीपल आर देयर इन वन ग्रुप एंड वी आर सेंट टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर कैंपिंग एंड ट्रैकिंग. नाउ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कहूँ तो इस बार हमें, मेरे जो ग्रुप था पर्टिकुलरली, हमें भेजा गया चैनशिल बुग्याल करके एक जगह थी. वहाँ पे जो स्टार्टिंग था इट वॉज टोटली अमिड्स लाइक द नेचर, जंगलों के बीच में ट्रैकिंग एंड कैंपिंग and going up to different heights each day. We are topping different heights. We reached up to maximum 3,600 feet above the ground level, and we experienced different sort of bonding among our colleagues. I think Himalayan Trek का main motive यही होता है कि ऑफिसर ट्रेनीज़ के बीच में इन 7 days बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए ऑफिसर ट्रेनीज़ के बीच में. एंड वी फाउंड इट प्रिटी यूजफुल बिकॉज दिस बॉन्डिंग इट्स नॉट ओनली अ फ्रेंडशिप, ये लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग होती है एक दूसरे में. वी आर हेल्पफुल टू ईच अदर थ्रू आउट आवर जर्नी, इवन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो एक बॉन्डिंग के लिए. दूसरी बात यह है कि वी शुड बी ऑलवेज हम्बल. वॉट एवर पोजिशन वी रीच, वी शुड बी ऑलवेज हम्बल इन आवर लाइफ्स. देखिए हिमालयन ट्रैक का एक्सपीरियंस था. देखिए वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, मोबाइल नेटवर्क नहीं था फॉर 7 days. सो वी वर कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. इट वॉज ओनली अस 20 पीपल हु वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. We were walking like around 9-10 kilometers. आपको लगेगा 19 kilometers is nothing, but we were going uphill. ऐसे पहाड़ चढ़ के जाना 9 to 10 kilometers every day. Then living among the nature, tents में रहना है. Even वहाँ पे जो water था, तो water भी इतना temperature was so low कि water भी बर्फ़ बन जाता था. And we did not even get to shower for 1 week. So imagine कि मतलब कैसे conditions में हम रहे वहाँ पे. But it was all fun. Because there was so much enthusiasm, so much excitement to explore different places. और हम सब में जो एक अलग सी bonding create हो गई थी. नाइट टाइम जो हम लोग का एक कैंपिंग था उसमें हम लोगों ने कहते कि हम लोग जो वहाँ पे हम लोग ने जो सर्विसेज थे वो आउटसोर्स की थी फूड के लिए, कंपनीज हु ऑफर्ड देयर सर्विसेज. एंड रात को बॉनफायर होते थे, वी यूज्ड टू प्ले गेम्स, वी यूज्ड टू सिंग. सो देयर वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ बॉन्डिंग.
सो हमें वहाँ पे कुछ खाना वीना बनाना नहीं पड़ता था. वहाँ पे द प्राइवेट ट्रैक कंपनी विच वॉज हायर्ड, दे लुक्ड आफ्टर ऑल ऑफ अस and they gave us excellent services. So the location that we went to was Chainshil Bugyal. That was our location. Different trek groups का अलग अलग location होता है. They all go to different camping sites. So everyone has different experiences. But हमारा going through different villages as well on the way during the trek and meeting the local people, that was another level of like bonding and excitement that was created. Because trying to know कि वो क्या काम करते हैं वहाँ पे, उनका क्या occupation है, कैसे वो जीते हैं वहाँ पे. इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है तो कैसे रहते रहेंगे. वहाँ पे कुछ विलेजेस में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी. बट वी फाउंड दैट कि उनका एक्सपीरियंसेस लिविंग इन दैट कंडीशन, दे वर सो हैप्पी. इट वॉजंट लाइक दे वर फाइंडिंग इट एनीथिंग डिफिकल्ट. सो इफ दे कैन लिव, व्हाई कांट वी लिव इन सच कंडीशंस, लाइक. सो फॉर 1 week इट वॉज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. यस, वहाँ पे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं इफ़ पीपल आर नॉट यूज टू लाइक वॉकिंग सच लॉन्ग डिस्टेंसेस, या फिर किसी को कोई ब्लड प्रेशर इश्यूज़ है, मेडिकल इश्यूज़ है, ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं. फॉर दैट वी हैव वन ट्रेन डॉक्टर इन ईच एंड एवरी ट्रैक ग्रुप who looks after everyone. Each day we also communicate with our headquarters, that is Labasna in Mussoorie. So it was altogether a very good experience, and everyone enjoyed it thoroughly. And yes, we have to be, instead of being physically prepared, we have to be mentally prepared for the Himalayan trek. I feel physically कोई भी Himalayan trek कर सकता है, but if we are not mentally prepared, I think it will be very difficult to sustain for those 7 days. So we have to be very much mentally prepared कि हमें ये trek complete करना है. We have to enjoy whatever we do get. We have to bond with each other, and also we have to be humble. ठीक है, because living with the bare necessities, ठीक है, in midst of the nature or the mountains, I think it teaches us different things. So Himalayan trek is a very good part of our lives, and we will cherish the memories throughout our lives. So it is a must experience during our Labasna times. Now, what all precautions we took during COVID times? See, वहाँ पे everyone wore mask. Everyone carried hand sanitizers. There was social distancing which was followed. Whenever we used to visit any villages where other people lived, वहाँ से हम लोग जब भी पास होते थे, हम लोग प्रिकॉशन लेते थे कि विलेजेस के साथ में कांटेक्ट में ना आए. हम लोग हमेशा मास्क पहने रहे, हम लोग हमेशा सैनिटाइजर्स यूज़ करें. सो प्रिकॉशंस तो लिए गए थे वहाँ पे. नाउ देर इज़ अनदर क्वेश्चन व्हाट एवरीवन आस्क इज़ अबाउट फाउंडेशन कोर्स. ये फाउंडेशन कोर्स होता क्या है, कितने टाइम के लिए होता है, एंड हाउ वाज द फाउंडेशन कोर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आवर टाइम दिस ईयर कंसिडरिंग इट वाज कोविड. See, foundation course, as I told you, usually 3 months का होता है, but this time it was shortened. It was only for 66 days. In 66 days, we had lectures from different guest speakers on different subjects. There are different subjects which are taught over there. It's like public administration, economics, history, and even law is taught over there. So there are different subjects which are taught over there. We are given assignments on it, and it's a very good experience because you get like जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है, you get to feel it, you get to know it, and also we get to experience it, meeting the big stalwarts which are already in administration, and gaining from their experience is a big thing as well. So this is a big part of the foundation course. And also during the COVID times, इस बार एक ट्रेजेडी बोल सकते हैं. So many of the officer trainees, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि they reported positive for COVID after the Himalayan trek. So we do not know where it came from, but इतना कह सकते हैं कि जो level of containment था, I think जो Labasna administration थी, they worked really hard to contain it and so that it does not spread. And even the officer trainees participated very actively in it. No one came out of their rooms. Everyone were quarantined in their rooms. Or I know it was difficult part to be in our own rooms for 15 days. All the lectures were shifted online. But एक good part इसमें ये था कि no one lost their enthusiasm. There were different committees which are formed in Labasna. जैसे cultural committee होता है, academic committee होता है, literary committee होता है, sports committee होती है. So जो different committees थी, they came together. They held various competitions which were online. So this was
really good because I am sure many of you have seen videos and pics कि कैसे officer trainees during their quarantine in rooms they perform different activities like singing, they did mimicking as well, they performed dancing as well in their own rooms. So this 15 days went by like nothing. Everyone actively participated in it और सबने enthusiasm दिखाया. Even the quarantine time was fun for all of us because we were actively involved in something or the other. Apart from lectures जो online चल ही रहे थे, जो activities थी, extra curricular activities, वो भी हम लोग कर ही रहे थे. We were taking part in various competitions, so it was very positive. And Labasna Academy, the administration over there performed really well in containing this COVID and made sure that it does not spread. So that those 15 days were bit, like tough, but they were also good because there was also creativity which came out of all the officer trainees, which could be seen, like in their different videos. I'm pretty sure everyone must have seen through the Instagram post or something. So that was part of it. एक क्वेश्चन मुझे और एक पूछा गया था कि आप ट्रैक के लिए प्रिपेयर कैसे होते हो, हिमालयन ट्रैक के पहले आप प्रिपेयर कैसे होते हो. तो एवरी सैटरडे संडेज we are taken on a trek. Saturday और Sunday we are taken on a trek nearby. There are nearby spots जैसे बेनॉग हिल होता है, जॉर्ज एवरेस्ट होता है. So we are taken on a short trek. ठीक है, this short trek हम लोग को every week किया जाता है so that we get used to it और हम लोग वो कंडीशन से used to होने के बाद में we can perform the Himalayan trek. कोविड के वजह से इस बार फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी चेंजेस हुए थे. लाइक मेनी ऑफ द स्पीकर्स they did not visit the academy. Like most of the lectures were online. We were present in the classroom जहाँ पे social distancing follow किया था. The classrooms, the groups were also divided. For all the UPSC CSE aspirants, I have got a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE GS batches. The batches will be starting from 18th of January and the batches are in 6 months, 1 year and 2 years. The batches will complete your UPSC preparation. What is a new feature about these batches? They will complete your entire GS syllabus with 500 hours of live classes, free PDF study material will be provided, a structured schedule and doubt clearing sessions will be there from top Unacademy educators. The batches will be conducted in bilingual Hindi and English. What are you waiting for? Enroll now in the 18 January batches. All you have to do is to enroll, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app. As per your preparation, select your batch, get an instant discount of 10% using the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. So Himalayan trek, I think it was a wonderful experience. I'm sure कि मतलब everyone, each of my colleagues will say the same thing. We are still in touch. जितने भी group में हम लोग members थे, हम लोग हमेशा touch में रहते हैं. And the most important part of the Himalayan trek was the bonding, the friendship which creates and it lasts for lifetime. I'm sure everyone, whenever you get selected, you'll get to experience it and just look forward to it. ठीक है? Don't try to avoid it. Just look forward to it and go for it.